All right, so we are live. Hello and welcome everyone to the fifth edition of Live in Conversation with मस्त कलंदर ट्रैवल्स। मैं हूं डॉक्टर विजेता महेंद्र और आप मुझे प्यार से डॉक्टर वी विजेता या विज्जी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के बारे में सोचते हैं तो वी गेट अ स्टीरियोटिपिकल इमेज कि ये सीरियस एंड बुकिश होंगे एंड सर्टेनली अनग्लैमरस होंगे। लेकिन अब समय बदल रहा है एंड जस्ट लाइक ऑल द अदर फील्ड्स of work, people in science are also no longer living unidimensional lives in the labs wearing a white coat only. Our guest today, Dr. Saswati Karmakar, who is a Stanford based scientist, and she's commonly known as Misha. इनका रिसर्च वैसे तो काफ़ी सीरियस फील्ड में है। शी इज़ वर्किंग ऑन कैंसर बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के बियॉन्ड मीशा का एक और पैशन है, वो है ट्रैवलॉजी। फ्रेंड्स, इनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है ट्रैवलॉजी टेल्स, जो काफ़ी कम टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ शो कर रहा है, विच इज़ वाई आई थॉट इट अप्रोप्रिएट कि हम इन्हें इन्वाइट करें लाइव इन कॉन्वर्जेशन में, सो दैट हम इनसे सीख सकें कि कैसे एक फुल टाइम सीरियस जॉब के साथ हम ट्रैवलिंग एज वेल एज कंटेंट क्रिएशन का काम रेगुलरली कर सकते हैं और स्टेडी ग्रोथ अपने सोशल मीडिया में भी दिखा सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो हमारे ऑडियंस ने अभी ज्वाइन किया है, पहले तो आप सारे ऑडियंसेस का धन्यवाद कि आप संडे के सुबह 10 बजे, और जो यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं सैटरडे नाइट को आपने ज्वाइन किया, बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो ड्यूरिंग द डिस्कशन तो प्लीज़ उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दें। मैं ज़रूर इस डिस्कशन के दौरान मीशा से ये सवाल पूछूंगी एंड शी विल बी एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस। So I will begin now by thanking Misha for giving us her precious time on a Saturday evening and for joining us here. So let's begin by your introduction, Misha. थैंक्स विजेता फॉर हैविंग मी। मैं आपके लाइव इन कॉन्वर्सेशंस देखती रहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। मैं बचपन से ही मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। वो इसलिए क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स ही मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। तो बचपन से ही डिनर टेबल पे बहुत ही साइंटिफिक कॉन्वर्सेशंस होती थी, जिसमें मैं बहुत ही कुछ कुछ साइंटिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती थी और उनका आंसर मुझे एक साइंटिफिक वे में मिलता था, तो उससे मैं और भी क्यूरियस हो जाती थी। तो इस तरह से मेरा बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट था। और फिर जैसे मैं क्लास 10th में आई तब मुझे पता चला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके भी एक फील्ड है जहाँ पे डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है, और वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था कि कैसे सेल की डीएनए को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे हम एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं या उसमें कुछ भी चेंजेस करके हम कुछ भी एक नया बना सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ एथिकल considerations, but as a +2 student you find it like really interesting and exciting. तो मैंने फिर +2 में बायोटेक्नोलॉजी लिया एज अ सब्जेक्ट, और उसमें मैं और पढ़ने लगी, उसके बारे में और जानने लगी। एंड देन अंडरग्रेड में मैंने इंजीनियरिंग किया बायोटेक्नोलॉजी में आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद फिर जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बाहर है। मतलब यूएस में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, बहुत फास्ट पेस्ड रिसर्च हो रही है इस पे। एंड देन मैं यूएस आई, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद। वहाँ आके मैंने बहुत सी, जैसे यूएस का स्ट्रक्चर इंडिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। आई थिंक इंडिया में भी अभी पीएचडी में रोटेशंस होते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लंबे रोटेशंस होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट लैब्स में थोड़े दिन के लिए काम कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वहाँ का आपको एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं, रिसर्च इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, आपका जो मेंटर है उसके साथ आपका तालमेल बैठ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने 3-4 लैब्स में रोटेट किया और फाइनली मैंने एक लैब ज्वाइन की जहाँ पे पैंक्रियाटिक कैंसर पे रिसर्च होता है। तो पैंक्रियाटिक कैंसर एक बहुत ही डेडली मैलिग्नेंसी है जिसका ऑलमोस्ट कोई इलाज है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक रियली बैड।
Out of all the people that get diagnosed, 90% actually succumb to this disease. तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत रिसर्च का स्कोप है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मतलब बहुत से कैंसर्स ऐसे हैं जहाँ पे वी हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन ट्रीटमेंट। फॉर इंस्टेंस ब्रेस्ट कैंसर में हम अभी बहुत हद तक ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए हम ये नहीं कह सकते। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो। उसके साथ-साथ ही मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया जो कि थोड़ा अपकमिंग था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, व्हिच इज़ कैंसर स्टेम सेल्स। तो जैसे बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं जो किसी भी टिश्यू को रिन्यू करने में मदद करते हैं, वैसे ही कैंसर में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कैंसर के सेल्स को ग्रो करने में या फिर रेप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। But वो cancer stem cells are also known as tumor initiating cells, and they can, help the cancer to spread throughout the body. लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कैंसर स्टेम सेल्स की जिससे वो ये सब कर सकते हैं, और उनको हम कैसे ट्रीटमेंट से टारगेट करें। तो ये मेरा एक पीएचडी का रिसर्च टॉपिक था जहाँ पे मैं समझना चाह रही थी कि कैंसर स्टेम सेल्स में कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि अबंडेंटली एक्सप्रेस्ड है, और उन प्रोटीन्स को हम कैसे टारगेट करें, एनिमल मॉडल्स में हम कैसे उसको और डिटेल में स्टडी करें। तो ये मेरा पीएचडी का टॉपिक था। अम, अब चलिए आते हैं ट्रैवल के तरफ। तो ट्रैवल का पैशन मेरा शुरू से ही, ट्रैवल की तरफ भी मेरा एक पैशन था। हम लोग बचपन से ही घूमने जाते थे, फैमिली ट्रिप्स पे जाते थे मेरी मॉम के साथ। माय मॉम इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो वहाँ हम लोग भी चले जाते थे थोड़ा घूमने, जैसे होता है, जो कि मैं अभी भी यूज़ करती हूँ अपनी किसी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। मैं कुछ दिन के लिए एक्स्ट्रा रुक जाती हूँ ताकि मैं वहाँ थोड़ा साइट सीइंग कर पाऊँ। तो वो बचपन से ही जारी है सिलसिला। अम, हाँ, तो ट्रैवल का तो शौक था ही शुरू से, और वो और भी ज़्यादा उभर के आया जब मैं यूएस आ गई अकेले पढ़ने। और मैं क्या बताऊँ उम्र कि थी आपकी जब आप हाँ, यूएस आई? आई वाज़ 22 व्हेन आई केम हियर। ओके। एंड अकेले? वो हाँ, अकेले। मेरी एक एक्चुअली फ्रेंड भी थी जो मेरी अंडरग्रेड में फ्रेंड थी, तो वो भी मेरे साथ आई थी, बट इवेंचुअली वी स्टेड इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स। सो वो थोड़ा एक मॉरल सपोर्ट था शुरू में, बट देन आई थिंक our lives kind of became more independent as we, advanced in our PhD. बट हाँ, तो वो इतना बड़ा एक चेंज था, क्योंकि जैसे आप घर पे रहते हैं, और इससे पहले मैं कभी भी किसी हॉस्टल में नहीं रही, कहीं मतलब स्कूल ट्रिप पे नहीं गई मैं इससे पहले। तो आप सोचिए कि वो एक इतना बड़ा चेंज था मेरे लिए। और यूएस में आने के बाद यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिनेरियो, मतलब सब कुछ आपको खुद करना है। यू हैव टू डू ग्रोसरीज ऑन योर ओन, if you get a car, then you have to maintain your car on your own. You have to think about insurance, you have to think about rent, you have to manage your finances. मतलब सब कुछ एकदम से आ जाता है, और इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको लैब में रिसर्च भी करना है, आपको अपने प्रेजेंटेशंस के बारे में सोचना है। मतलब एक बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम होता है शुरू शुरू में, लेकिन फिर मुझे लगता है समय के साथ आप लोग मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद ही मैनेज करना सीख जाते हैं समय के साथ-साथ। और साथ में एक जो मॉरल सपोर्ट होता है पीयर्स का, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि देयर आर मेनी अदर पीयर्स दैट आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग एज़ यू। या तो वो था। हाँ, जब नेस्ट से बच्चा गिरता है तो वो अपने आप उड़ ही लेता है किसी तरह से, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने भी सही, किसी तरह से सीख ही लिया बस। बिल्कुल सही। जी। हाँ। तो फिर आपके एकेडमिक जर्नी में लाइक आपका कितने घंटों का काम होता था? आप पढ़ते कितना थे और कैसे घूमने-फिरने का टाइम निकाल पाते थे? ये थोड़ा बताएँ? तो मैं बहुत ही स्टूडियस हूँ बचपन से ही, तो मैं पीएचडी में भी बहुत सीरियस थी। मैं पढ़ती थी काफ़ी, मतलब जो भी इस क्लास में पढ़ाया जाता था मैं तभी पढ़ लेती थी विदिन विदिन लाइक द वीक और द नेक्स्ट वीक। बट साथ-साथ मुझे लगता है कि मैं वीकेंड्स पे अपना फ्री रखती थी, तो वीकेंड्स पे मैं आइदर घूमने चली जाती थी कहीं, या फिर किसी कल्चरल इवेंट में इन्वॉल्व हो जाती थी। जैसे
आई एम अ बंगाली, तो वहाँ पे एक बंगाली एसोसिएशन है जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी, तो आई गॉट इन्वॉल्व विद अदर पीपल इन दैट एसोसिएशन। तो वहाँ पे कभी दुर्गा पूजा के टाइम पे कल्चरल इवेंट हो रहा है या फिर रविंद्र जयंती के टाइम पे कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है, तो वो मैं हमेशा से ही पार्टिसिपेट करती थी उन सब इवेंट्स में। साथ साथ फिर जैसे 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 मुझे लगा कि क्लासेस जब ख़त्म हो जाती हैं पीएचडी की आपकी, या तकरीबन 1.5 साल के बाद क्लासेस उतनी नहीं होती, मतलब एग्जाम्स नहीं होते, देयर इज रिसर्च एंड देन देयर इज सम प्रेजेंटेशन, सम जर्नल क्लब, बट देयर आर नो Right. एग्जाम्स। There's तो and there's no class work as such, yeah. हाँ, तो Hmm. तब आप तब उतनी देर में आप सीख जाते हैं कि अपना लोड कैसे मैनेज करना है, तो फिर यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड देयर इज मोर फ्री टाइम एज सच, बिकॉज आप यू नो हाउ टू मैनेज योर वर्क वेल देन बाय देन। Right. वो उस टाइम पे फिर हम लोग गए एक ट्रिप पे। इट वाज ऑल गर्ल्स ट्रिप, मी एंड टू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो वी ड्रोव फ्रॉम ओमाहा नेब्रास्का टू डेनवर कोलोराडो, एंड दिस वाज ड्यूरिंग ऑटम। तो बहुत ही सुंदर टाइम था डेनवर विजिट करने के लिए, बिकॉज द वेदर वाज परफेक्ट, इट वाज नॉट टू कोल्ड, एंड वी वर एबल टू सी रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क। और फिर वहाँ से हम एस्पेन गए, वहाँ पे बहुत ही सुंदर एक बहुत ही पिक्चरस्क एक टाउन है एस्पेन। इट्स बेसिकली सपोज टू Yeah. हैव सेलिब्रिटी हाउसेस देयर, और फॉल कलर्स के लिए बहुत ही मशहूर है। तो और मुझे नेचर से रिलेटेड, मतलब मेरे को सीजन्स और नेचर से रिलेटेड कुछ भी हो, बहुत ही मैं बिल्कुल आई एम क्रेजी अबाउट इट। तो फॉल एंड स्प्रिंग आर माई फेवरेट वेदर्स, और आई मीन सीजन्स। तो वहाँ पे मैं Because of फॉल all का, the different colors, yeah. हाँ, हाँ। और अगर आप मुझे बोलो कि चूज़ करो स्प्रिंग और फॉल में, तो मैं फॉल को चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इतना ही फ़ैसिनेशन है फॉल का। तो वहाँ Yeah, पे I've been following your posts. तो आपने तो फॉल में एकदम भर भर के बहुत हाँ, पोस्ट किए. हाँ। हम्म. तो Nice. तो वो टाइम बहुत अच्छा था। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि कैसे So अ was that like the first proper trip that you took with your friends after your classwork period ended? एक्चुअली नो, दैट वाज़न्ट द फर्स्ट ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप जो था वो था जब क्लास वर्क खत्म हुआ, तो हम लोग, दिस वाज़ मी एंड माय अदर फ्रेंड जो दिल्ली से आई थी मेरे साथ। वी Hmm. फ्लेw टू एरिज़ोना टू मीट अनदर फ्रेंड ऑफ अस। तो वो वहाँ थी, और एरिज़ोना से फिर हम लोग ड्राइव करके गए ग्रैंड कैनियन, और हमने ग्रैंड कैनियन देखा, और उसके आसपास कुछ और भी अट्रैक्शंस है, जैसे एंटेलोप कैनियन है, हॉर्सशू बेंड है, तो हम लोग वहाँ सब गए थे। एंड देन हम लोग फिर वापस आए, वेगस में रुके। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस कह लीजिए या क्या, मतलब आई वाज़ बारली 23 एंड फर्स्ट ट्रिप वाज़ टू वेगस। तो Perfect. एकदम perfect introduction to the US है ना? हाँ, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ मैं थी ओमाहा नेब्रास्का, दैट इज़ मोर लाइक अ स्टूडेंट कॉलेज Yeah. टाउन, तो वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए। अम, जो कि अच्छा है, क्योंकि पीएचडी में आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। Right. लेकिन तो वो फर्स्ट ट्रिप था, काफ़ी यादगार ट्रिप था वो। अ, So, Misha, traveling is one thing and then traveling content creation is another. घूमते तो बहुत लोग हैं बट फिर उसमें कंटेंट बनाना और ये सब, तो हाउ डिड यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड व्हेन? हाँ, तो this actually happened pretty recently. I would say this started in 2021 or middle of 2021. So what actually happened is that मैं ऐसे ही, and I'm pretty new to Instagram also. I've had my account only since 2020. Before this, I never had Instagram. Um, तो मुझे मैंने शुरू किया जस्ट एज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल माय ट्रैवल एस्केपेड्स। तो एक्सपीरियंसेस. मैं सिर्फ़ उसको डॉक्यूमेंट कर रही थी, एंड देन ज़्यादा मेरा कोई उसके साथ गोल भी नहीं था। बट देन 2022 केम, एंड देन मिडवे थ्रू 2022 आई रियलाइज़्ड कि मैं ऑलमोस्ट हर महीने कहीं न कहीं जा रही हूँ। कभी-कभी मतलब 1 महीने में 2-3 बार कहीं न कहीं जा रही हूँ। आइदर इट्स अ कॉन्फ्रेंस, और it's to attend a friend's wedding, or it's to just go meet up with some friends in the new वीकेंड town. हाँ थिंग. तो फिर मुझे लगा दैट व्हाई शुड आई नॉट टेक इट अप मोर सीरियसली, क्योंकि वो मेरे लिए एक रिसोर्स नहीं है, बट बाकी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी और रिसोर्स है। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लेट मी जस्ट मेक माय प्रोफाइल पब्लिक एंड सी व्हाट रिस्पॉन्स आई गेट।
And then I think it just started from there. Hmm. I started getting more response. People started reaching out to me and asking कि अच्छा यहाँ पे तुम गए थे अभी भी ये है वहाँ पे. Like recently, I posted a lot of spring updates recently in California. So people have actually texted me and asked अच्छा अभी भी mustard grow कर रहा है यहाँ पे? Oh, can we still see almond blossoms here? So I think that gives me pleasure because if you're able to help other people who want to go explore what there is in the local area, then that's something that's very empowering. Yeah, sure, sure. Because that's the other kind of impact that you're making apart from your research, and it's just great to expand your, horizons. So that's amazing. So since you became a content creator, do you like make special preparations before you go on a trip, which you probably did not do earlier, or you've been always researching a place before going somewhere? How do you do it? Yeah, so there have been some things that have been constant, like even before I started posting or creating content for Instagram, which was to have some sort of a plan or some sort of an itinerary in place. तो वो शुरू से ही था. But then what became more and more important as I started creating content is that I also have to think about my outfits. Sometimes I think about what props I need. Um, and I also think about what time to reach a particular place. So that requires a lot of planning, because since you're going there with the purpose of creating content in addition to seeing that place, you need to reach at a time where maybe it won't be as crowded at that time, so then so that you can create content without disruptions. So that is something that has become more and more common as I've started posting more. Yeah. uh, yeah. And what about, like, you shared with me that you read some blogs before going, like, about Yeah, what. so that aspect has been there since before. So Okay. I used to read before going to a place, even before. Hmm. Now it has become much more streamlined because now I know also which place would people find more appealing. Like there are some places which I would go to even if they are not as appealing, or even if I think that it won't be as appealing for the Instagram. But those are the places that I want to visit. But most of the Yeah. time, obviously, I have to keep the content creation in mind. Yeah, so regarding that, do you like, have a strategy in mind always, like, do you do a keyword search कि कौन सा जगह सबसे ज्यादा लोग search कर रहे हैं, and then you go and visit that place in a particular area that you are going to anyway, या फिर मोर ऑफ दिस कि मुझे यहाँ पे जाना है, मैं देखूंगी और फिर मैं वीडियो बना दूंगी उस हिसाब से? व्हाट डू यू डू, और यू बैलेंस बोथ? I think it's a mix of both, but I don't search for keywords ever. It's usually some places that I've either found my fellow content creators posting about and I've found inspiring and I've found like inspirational. So then I make a point to go visit those places. Or it's just something that I came across on some blog or somewhere or I read about, and then I feel like that I need to visit this place. So then I go. But I never search for keywords or what's trending. या क्योंकि जो यूट्यूब गुरुज होते हैं वो बताते हैं ना कि आप कीवर्ड सर्च करो, फिर आप कहीं घूमने जाओ, उससे आपका मतलब उसका ट्रैवल, उसका कंटेंट क्रिएट करो तो उसका हाँ, रीच ज्यादा होगा, एंड थिंग्स ये लाइक दैट. एक्चुअली ये मेरे लिए भी नया है. दिस इज लाइक अ न्यू आई गेस ट्रिक फॉर मी आल्सो बिकॉज़ मुझे नहीं पता था ये. हाँ, अच्छा. So, Misha, what does your content really focus on? Like, do you have a niche? I say you shared about the seasons, but apart from that, what is like, what would you define your niche as? Yeah, so my niche is basically nature inspired travel inspiration. Okay. So I post a lot of seasonal content and look about a lot of local hidden gems. Yeah. Um, and then I would say it's mostly centered on US with the exception of when I went to Europe. So that Hmm. was sort of an exception because there I was attending a conference, so I decided to stay back and visit another country there. But Hmm. it's mostly US centered and it's inspiration derived from nature. Right. So you have already, touched upon this next thing that I'm going to ask you, which is about, the
outfit strategy. The thing is ki I feel a little bothered about that as a content creator myself, because content creators are expected to wear new and unseen clothes all the time. And मेरे को तो इतने सारे कपड़े खरीदना एकदम एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं लगता। पॉकेट फ्रेंडली तो अलग बात है, मेरे को ज्यादा एनवायरमेंट कंसर्न बहुत ज्यादा लगता है। मेरे को नहीं अच्छा लगता भर लो इतने कपड़े एक एक बार पहन के। एंड मगर क्योंकि ये एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, यू नो, हमारा इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, तो हमें उसको भी माइंड करना होता है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट एंड व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? हाउ डू यू गो अबाउट इट? डू यू कीप बाइंग क्लोथ्स बिफोर एवरी ट्रिप और व्हाट डू यू डू? नहीं, एवरी ट्रिप से पहले तो नहीं लेती मैं, बट मुझे लगता है इसका स्ट्रैटेजी एक है कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मतलब मे बी इफ़ यू आर वेयरिंग द सेम ड्रेस, मे बी यू कैन पेयर इट अप विथ लाइक अ डिफरेंट कार्डिगन, और यू टेक अनदर क्रोशिया का स्ट्रोल या कुछ, एंड देन या फिर आपने उसको डेनिम जैकेट के साथ पेयर कर लिया और सेम ड्रेस को, तो वो अलग लगेगा। मतलब पीपल विल नॉट नोटिस सो मेनी माइन्यूट डिटेल्स, बिकॉज Hmm. अल्टीमेटली दे आर हियर, they are there to look at the background and look at the message that you are trying to deliver, right? It's not until and unless it's like a fashion or a cloth based Instagram, then I Hmm. think changing clothes is probably very important. But um, as far as your blog is concerned and my Instagram is concerned, it's more about travel inspiration. So as long as I'm going to new places, I don't think wearing the same clothes would make a lot of difference, right? So Okay, so what I I think all the content creators and new upcoming aspiring content creators should note this, कि अगर हमारा फैशन क्लोथ्स का फैशन बेस्ड नहीं है, तो हम लोग को कपड़ों के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने का नीड नहीं है, है हाँ, ना? हाँ। मुझे हम्म। लगता है एज़ लॉन्ग एज़ आप, या तो 2 स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, या तो आप बैकग्राउंड के साथ मोनोक्रोम में पहनिए, मतलब जस्ट यू ब्लेंड इन द बैकग्राउंड, और यू कैन चूज़ समथिंग दैट्स इन टोटल कॉन्ट्रास्ट टू इट, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मुझे किस टाइप के शॉट्स चाहिए, मैं उस हिसाब से दोनों ही ट्राई करती रहती हूँ। एंड देन कुछ मेरे सेट प्रॉप्स है, लाइक सम हैट्स और सम अम्ब्रेलास और समथिंग, सो कुछ बास्केट ले लिया, कभी कुछ कर लिया, मतलब डिपेंडिंग ऑन जहाँ भी जा रहे हो उस हिसाब से प्रॉप्स चेंज करते रहती हूँ, तो वो फिर सेम नहीं लगता। ट्रू दैट, एकदम एकदम। आपका तो हर बार मेरे को न्यू कपड़ा लगता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अपना ऐड किया है। मेरी न्यू मेरे को कपड़ा कभी नहीं नहीं होता। लगा कि आपने कपड़े रिपीट किए, तो इसीलिए आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट रियली यू नो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी। सो थैंक्स फॉर दिस, ऑल दीज टिप्स दैट यू जस्ट शेयर्ड। सो टिप्स की बात करें तो आप ये बताएं कि एज अ स्टूडेंट आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुकी थी और इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स कर रही थी, तो हाउ अबाउट द एक्सपेंस? क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स को यूएस में कोई बहुत ज्यादा खास हम्म। स्टाइपेंड तो मिलता नहीं है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रगल्स की कहानियां हम लोग सुनते हैं, उस कार में सो रहे हैं एंड थिंग्स लाइक ये तो मुझे नहीं पता, कार में सोने की बात तो नहीं पता मुझे, मतलब एटलीस्ट मैंने आर्ट स्टूडेंट्स का तो ये हाल होता है। आई एम श्योर अच्छा, साइंस वालों का शायद नहीं होता होगा, बट हाँ, मतलब स्टिल ऐसा नहीं है कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट स्टाइपेंड रहता है ना? हाँ तो हाउ डू यू एग्जैक्टली। मैनेज लो बजट में इतना ट्रैवलिंग? हाँ, तो इसके लिए काफ़ी सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एक तो मुझे लगता है कि आप यू नीड टू हैव अ सॉलिड प्लान इन प्लेस। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि आपने लास्ट मिनट कुछ प्लान किया। यू नीड टू प्लान एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स इन एडवांस कि कहाँ आप जाओगे, ताकि आपको रीज़नेबल रेट्स पे फ्लाइट टिकट्स मिले और रीज़नेबल रेट्स पे होटल या फिर एयरबीएनबी का कोई या फिर कोई भी जहाँ भी अकोमोडेशन आप ले रहे हैं वो मिले। हम्म। लास्ट मिनट प्लानिंग तो पॉसिबल नहीं थी। पीएचडी के टाइम पे भी लास्ट मिनट प्लानिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि एंड में तो एक तो आपको एक्सपेरिमेंट्स भी प्लान पहले से करने होते थे, तो पता रहता था कि किस टाइम पे थोड़ा वर्कलोड कम हो सकता है या फिर किस टाइम पे एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है, तो उस हिसाब से पहले से प्लान करना चाहिए। दूसरा एक है कि if you travel in off season or shoulder season, that's like the best way to save money, because flights are cheaper, hotels are cheaper, you can avoid more and more tourists, and you can probably enjoy the place in a much better way. तो वो एक
और हर एक जगह का ऑफ सीजन अलग होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह का ऑफ सीजन सेम होगा। तो जहाँ आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ का ऑफ सीजन क्या है। दूसरा जो मुझे लगता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ ओनली रेलेवेंट टू यूएस, क्योंकि मुझे इंडिया का बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया में मैं आई वाज नॉट अर्निंग इन इंडिया, वाज जस्ट डूइंग माय अंडरग्रेड, तो मैं एक्सपेंसेस नहीं देखती थी अपने तब। um, you can get like some sort of a travel card where you can get a lot of cash back money back, and you can accumulate more and more points. तो जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपके पॉइंट्स accumulate हो जाएंगे, उस हिसाब से आप उन पॉइंट से ट्रैवल एयरलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, या फिर यू कैन गेट अपग्रेड्स लाइक फ्री बैग और वट एवर। तो दिस हैज़ कम इन वेरी हैंडी फॉर मी, and I've had like a travel card since 2015, and that I think I've taken numerous free trips because of that. I mean, free flight tickets because of that. वाह। Uh, हाँ। एंड देन, बहुत। या। नहीं, मैं ये कह रही थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ट्रिप है जहाँ आपको जाना है, जैसे मे बी कॉन्फ्रेंस है, तो वो भी अगर आपने उस ट्रैवल कार्ड से बुक कर लिया, तो वो उसके पॉइंट्स भी आपके ऐड हो जाएँगे वहीं पे। एंड टेक्निकली यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट ट्रिप बिकॉज़ योर लैब और योर ग्रांट इज़ पेइंग फॉर दैट। राइट, राइट। So, yeah. So interesting, very nice and helpful tips you've given. Especially ये कि of course plan in advance and go in off season. लेकिन Yeah. ऑफ सीजन में जाने वाला टिप जो बहुत बहुत सारे लोग एक्चुअली देते हैं ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स, बट मुझे ये लगता है कि if there is a season for a place, maybe it's for a reason, right? कि ये वाला सीजन यहाँ पे एकदम पीक सीजन है बिकॉज कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है उस सीजन में, जिसके वजह से उसी सीजन में सब वहां पहुंच रहे हैं। तो उसका बताइए कि ऑफ सीजन में जाके कुछ आप मिस भी तो कर सकते हैं वहां का अच्छा चीज। हाँ, ऐसे हो सकता है, बट देन आपकी गोल्स क्या है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ओके। हवाई बहुत लोग ऑफ सीजन में भी जाते हैं, एंड इट्स इक्वली ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि हवाई आपको जाना है तो आप पीक सीजन में ही जाओगे, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग। Well, I think a lot of people go to Hawaii in off season, and it's like still awe inspiring. But obviously अगर आप fall colors देखने जाना चाह रहे हैं कहीं मतलब ईस्टर्न राइट। साइड ऑफ यूएस, तो वहां पे अगर ऑब्वियसली फॉल कलर्स अक्टूबर में ही होंगे, अगर आप जून में जाएंगे तो आपको फॉल कलर्स तो नहीं दिखेंगे। तो तो हाँ। तो ठीक है, आई अंडरस्टूड कि मतलब देख सकते हैं कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई सीजन का उतना वेरिएशन नहीं रहता है। हम्म। 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 ठीक है। सो मीशा, व्हाट इज योर गोल और योर विजन फॉर योर इंस्टाग्राम हैंडल? मैं बोलूँगी कि इट्स स्टिल अ वेरी न्यू एंडेवर फॉर मी। तो मेरा एज सच तो कोई गोल नहीं है। आई थिंक आई जस्ट वांट टू कीप क्रिएटिंग कंटेंट एंड इंस्पायरिंग पीपल टू ट्रैवल मोर, एंड देन कीप डॉक्यूमेंटिंग माय ट्रैवल एक्सपीरियंसेस and see how much, like how wide and far I can reach with it. I think that's it really. um Okay. yeah. And coming to monetization, you'd shared that you have started getting some opportunities, collaboration opportunities, as well as monetization Mhm. opportunities. So, what is the projection like? You know, you can, if you can let us know something related to that, because there are so many established and big names in this industry, and people who want to start now or who have just started a little while ago like myself, तो हम लोग किस तरह से इस ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में मोनेटाइजेशन की ओर देख सकते हैं? प्लीज, बिकॉज यू हैव सम एक्सपीरियंस अबाउट इट, प्लीज शेयर। हाँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत नया है, तो आई कैन ओनली शेयर माय लाइक वेरी रीसेंट एंड वेरी क्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है कि एंड ऑल दिस आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हु ऑफर लाइक फ्री क्लासेस on travel content creation and on monetization. So this is basically my understanding of how they did it. And since it's very recent for me, I can only, just add to it very briefly. So what you really need to do is, first of all, you need to have a defined niche, and you need to see if the brands that you want to collaborate with fall within that niche.
For instance, if I am a luxury, I am not a luxury travel content creator, but if I were a luxury travel content creator, then I would post about the various luxurious stays I would have, right? I would post about some hotel that I stayed in. I would try to elaborate how good the room was, how good the service was, how the check-in process was seamless, and repeatedly post about that so that you catch the attention of that brand, right? So that's like one strategy. And then another thing that you can do, which I have not done all of this, I'll come to what I have done, but Hmm. this is how you go about it. You can create a travel, something that is known as travel, uh, sorry, a media kit, something that's known as a media kit. Media kit. So your media kit will have why your media handles, be it Instagram or YouTube or TikTok or whatever, is appealing, and what your reach is, and then how can you influence your followers to I guess avail of a service that your brand is giving them, right? So all Hmm. this has to be packed in the media kit, and then you can start pitching to brands. And then the more brands you pitch to, the more your chances are to get a collaboration with the brand. Since I already have a full-time job as a scientist, I don't Yeah. really have the time to do this. So I've not been doing this. But since I think my Instagram has gotten some visibility recently, so brands have reached out to me, and I have collaborated with them. If I found that whatever they're offering is within my niche, and I can, incorporate that in my travel content creation. So that has happened. Um, Great, great. So, which type of brands have reached out to you, and how do you do these collaborations? In lieu of what exactly? In lieu of money or in lieu of like some experience or what? Because ये भी होता है no, ना, पैसे देते हैं या फिर stay दे देते हैं, travel का कुछ देते हैं. How what kind of offers are you getting? सो इट्स मोस्टली प्रोडक्ट सो फार. तो मुझे कुछ ड्रेसेस, कुछ शूज, ये सब मिले हैं, स्मार्ट वॉचेस, समथिंग दैट आई कैन यूज आपका शूज वो मैंने देखा है, वो कलरफुल शूज, राइट? हाँ. इट्स रियली नाइस. हाँ, नाइस. But अच्छा. I have, because I don't have a media kit, and because I don't have a strategy in place to pitch to these brands. So that's हाँ. why I have not discussed like monetization in like serious ways with these brands. But I'm also happy with what I'm getting so far, because as you all know that this is fairly recent for me and it's new for me. So I'm also like learning in the process. Yeah, but I was like through this conversation I realized कि ठीक है, you have a full time job, लेकिन आपने काफी research करा हुआ है इस एरिया में भी, ट्रैवल हाँ. के एरिया में, with all the answers that you've given. बहुत लग रहा है कि you've put a lot of effort into learning about the tricks of the trade. भले उसको अभी तक आपने तुरंत से implement नहीं किया है, Hmm. but you already have it in your sphere of thinking. तो वो हाँ. हो ही जाएगा eventually, आस्ते आस्ते. Eventually, I think the more time I devote to this, maybe I will head in that direction. But yeah, you never know what plans life हाँ, has for यू you. नेवर नो, राइट. Yeah. सो मतलब अभी तक आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ इंस्टाग्राम में है. डू यू फील दैट यू वुड डाइवर्सिफाई योर प्रोफाइल टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड टिकटॉक? तो इतना चलता है यूएस में. सो Hmm. यू थिंक यू अभी वुड बी तो डूइंग एनीथिंग अभी लाइक तो दैट इन द फ्यूचर? मे बी इन द फ्यूचर, बट अभी मेरे कोई आज सच प्लान्स नहीं है टिकटॉक या यूट्यूब का. आई कैन सी माई सेल्फ मे बी राइटिंग अ ब्लॉग इन द नियर फ्यूचर, बट वो भी कोई बहुत सॉलिड प्लान्स नहीं है. बट आई फील कि ब्लॉगिंग में यू कैन स्टिल डॉक्यूमेंट, पुट इन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज टिकटॉक एंड यूट्यूब मोर और लेस इंस्टाग्राम से सिमिलर ही हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गिव इज मोर और लेस सिमिलर ऑन हम्म, दोज. हाँ, लाइक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या है कि सेम ही कंटेंट को सारे प्लेटफॉर्म्स में अपलोड कर देते हैं, सो दैट हर प्लेटफॉर्म में ही उनका फॉलोइंग आ जाए. आई थिंक कि मतलब यू कुड हाँ. प्रोबेबली थिंक इन दैट डायरेक्शन कि कुछ अलग से नहीं करके सेम कंटेंट को सब में डालने वाला चीज है ना. हाँ. 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 मे सो बी वही एक चीज़ है कि आई प्रॉब्ली नीड टू लुक इनटू दिस. बट हाँ, मेरी तरफ से शायद थोड़ा मिनिमल एफर्ट ही लगेगा, बट वही है कि एक चीज़ है जो मेरी लिस्ट पे है, अभी तक मैं कर नहीं रही हूँ उसको.
हाँ, वो मतलब टाइम तो लगता है एक-एक चीज़ को, न्यू चीज़ को अडैप्ट करने में। मेरे मन में भी ऑफ कोर्स देयर आर 100 मोर थिंग्स दैट आई वांट टू डू, बट एक-एक करके इट हैपेंस रियली स्लोली, वो उसमें प्रोसेस में आने में। ठीक है, एक चीज़ मेरे को आपसे पूछना था कि योर अकाउंट काइंड ऑफ यू गॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मे बी आपका एक पर्सनल आपको फोटोग्राफर मिल गया आफ्टर यू गॉट मैरिड। बहुत उसके बारे में शेयर करिए कुछ कि हाउ डज योर हस्बैंड सपोर्ट यू एंड Uh, how do you make him click such amazing pictures of yours and videos? आई थिंक उसको फोटोग्राफी का शौक था शुरू से, उसने मुझे बताया था कि शौक है फोटोग्राफी का, एंड आई सॉर्ट ऑफ कोवर्डली टेस्टेड इट व्हेन वी मेट इन डेनवर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई अच्छा। ऑब्वियसली डिड नॉट टेल हिम कि इतनी फोटोज खींचो, एंड आई वाज नॉट इन माय परफेक्शनिस्ट मोड कि ये ऐसी फोटो आनी ही चाहिए, बट आई सॉ दैट ही हैज गुड स्किल्स. सो बट देन आई चेक वाज तो मतलब जो बोलते हैं ना, चेक्स लगाना होता है व्हेन चूजिंग अ पार्टनर, उसका सैलरी इतना होना चाहिए, लुक्स में इतना होना चाहिए। आपका एक ये भी क्राइटेरिया था कि फोटोग्राफी आना चाहिए उसको, जिस तरह पता से आप नहीं बात कर रहे क्राइटेरिया था कि नहीं, बट वो ऐसे ही इनएडवर्टेंटली चेक हो गया. आई डोंट नो इफ इट वाज अ एक्सीलेंट, क्राइटेरिया और नॉट. एक्सीलेंट, लकी यू। क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का आपका कंटेंट रहता है एंड कमेंडेबल जॉब ही इज डूइंग। या Yeah, I want to just share with my audience that Misha is actually my friend's wife. यहाँ मैं अपने ही फ्रेंड का पूरा तारीफ कर रही हूँ, विश्व जॉय नाम है उसका। तो it's great, good job, Vishwa Joy. You're really helping your wife's account, and I would actually give a message to my own husband. You should step up. I think you need to like really motivate the photographer. It's not as easy. मतलब पता नहीं. बताओ कैसे कर रही हो, because I think a lot of our female or even males who want their wives to click them, how do you motivate your partner? I think you have to like trade something with them. Either breakfast बनाओ या कुछ करो ताकि वो photos खींचे. I think that's what ओके। it is. अच्छा, मतलब इस टाइप से कुछ। हाँ. हाँ, ठीक है, ठीक है, अग्रीड, अग्रीड एंड अंडरस्टूड। इसको अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सबको को इस चीज को ट्रीट करना पड़ेगा। नो, नाइस, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ये काफी। तो मीशा, बिफोर वी गो फर्दर, बस आप एक बार ये बताएं कि आप कंटेंट क्रिएशन को वीक में हाउ मच टाइम डू यू गिव एंड हाउ मच यू आर एबल टू गिव एंड ऑन व्हाट डेज जनरली? So it's very subjective. It depends on how much I need to do in lab. But it's usually 1 to 2 hours per day when I'm posting actively. And I usually work on it at night, मतलब रात में सोने से पहले, and हम्म। then so that I can plan about the next post रात को ही, and I keep everything ready. और फिर मैं generally शाम को ही post करती हूँ, California time around 7 or 7:30 p.m., which is like morning in India, and that's all the content that I've edited the previous night or the nights before. Okay. So you are a scientist by day, content creator by night, and traveler by the weekend. है ना? Yes, ये yes. तीन आपका, That's it. that sums it up. Okay, so would you like one day want to become a full-time travel content creator, or your love for science and research is too strong for that to make that complete shift? I don't see that happening in the near future. I think I really enjoy what I'm doing. I enjoy cancer research, and I think that Hmm. what I'm doing is going to make a difference. Yeah, So, certainly. yeah, I'm going to continue doing research. Okay, so now I have a few more questions related to your travel experiences. But before that, I think I would like to show the audience some of your pictures, some of your beautiful pictures, and then you can just briefly tell us कि यहाँ क्या हो रहा है ना? Yeah. ठीक है? So just a second. सब यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं लोग आपके हस्बैंड का. My husband's also laughing in the comments. All the guys should actually tell us कि आपको क्या चाहिए बदले में, to click good pictures and videos of us.
वन सेकेंड। दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ओके, सो टेल अस वेयर यू आर हियर। तो ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स दैट आई एंड विश्वजॉय टुक एंड दिस वाज काफ़ी ये था जब मैं पीएचडी कंप्लीट करके कैलिफोर्निया आ रही थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया दैट वी विल ड्राइव फ्रॉम नेब्रास्का ओमाहा टू कैलिफोर्निया। तो ये हम लोगों का ऑलमोस्ट 6 डेज़ का रोड ट्रिप था और बीच में हम लोग 3 दिन के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क और ग्रैंड टीटॉन नेशनल पार्क में रुके थे। तो वंडरफुल। काफ़ी मज़े किए हम लोगों ने। एक्चुअली बिश्वजॉय ने उतना नहीं एन्जॉय किया बिकॉज़ ही फेल्ट सिक ड्यूरिंग द ट्रिप बट बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा ट्रिप था क्योंकि प्राइमरीली मैं ही ड्राइव कर रही थी और डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे जाके मैं देख रही थी एंड वी डेफिनेटली वांट टू गो बैक क्योंकि येलोस्टोन इज़ सच अ डाइवर्स नेशनल पार्क, वहाँ पे इतना कुछ है देखने को एंड इट्स हम्म। ट्रूली लाइक अ नेचर्स व्हाट डू यू इट्स कॉल इट? लाइक वंडर, वंडर, नेचुरल वंडर है वो पूरा, है Yeah. ना? तो you can see like a natural geyser in the background. एक या वाइल्ड मेरा तो यूएस का नंबर वन प्रायोरिटी यही है ना, येलोस्टोन जाने का। ऑल्दो वंस आई बीन टू द यूएस, लेकिन जस्ट न्यूयॉर्क अगेन फॉर कॉन्फ्रेंस। एंड हाँ फिर मैं न्यूयॉर्क सिटी में रही, थोड़ा वहां घूमा हफ्ते हाँ भर, लेकिन येलोस्टोन तो एकदम दूर है उससे, तो हाँ आई हाँ कुडंट मेक इट। हाँ लेकिन व्हेन आई वॉलंटरली गो देयर, मेरा एकदम सबसे नंबर वन प्रायोरिटी यही है। बहुत हम्म। अच्छा लगता है मेरे को भी। ओके, नेक्स्ट। दिस, वाओ। So this is Ho Rainforest in Olympic National Park. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिप था। तो हम लोग गए थे सियाटल अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने एंड हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं सियाटल में। तो इट वाज अ जैम पैक ट्रिप। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली, फिर विश्वजॉय के 2 फ्रेंड्स थे, हम लोग उनसे मिले। फिर एक फ्रेंड और के फैमिली के साथ हम लोग गए यहाँ ओलंपिक नेशनल पार्क में। तो हम लोग ऑफ सीजन में गए थे, हम लोग एक वीकडे को गए थे बट फिर भी ये हो रेन फॉरेस्ट में घुसने के लिए हमें 3 घंटे लाइन में वेट करना पड़ा। ये इतना पॉपुलर है। एट वाह। सम पॉइंट या एट सम पॉइंट वी वर वंडरिंग कि हम क्या वापस चले जाएं, मतलब पैदल चल के जा रहे थे हम देखने की कितनी दूर और लाइन है। एंड द रीजन इज दैट they have limited parking, तो once that parking gets full there's no way that you can enter। जब गाड़ियां अच्छा। निकलेंगी तभी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीख थी हमारे लिए कि हमें और सुबह जल्दी उठ के जाना चाहिए था बट वही है, जब आपके साथ और फैमिलीज होती हैं तो आप सबके स्केड्यूल के साथ मैच करते हैं। तो हम लोग थोड़ा आराम से उठ के निकले थे बट But इट it वाज looks, रियली this वर्थ place इट। looks ethereal एकदम, बहुत ही सुंदर। mm, this, So this is the Stanford Cathedral. This is where I work. Not in the cathedral, but wow, this is a part of the campus. और such कैलिफोर्निया। beautiful murals यहाँ पे। हाँ हाँ। really nice। मेरे को तो लगा कोई यूरोपियन नहीं, उसमें से स्टैनफोर्ड। होगा ये। very nice। ये This is one of our most favorite sunsets that we have seen. This is Pfeiffer Beach in Big Sur. तो यहाँ पे एक तो यूनिक फीचर है इस बीच का, मतलब बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं। एक है कि यहाँ पर्पल सैंड है। तो अच्छा। कुछ मतलब डिपॉजिट्स कुछ मतलब सेडिमेंटेशन डिपॉजिट्स ऐसे हैं कि पर्पल कलर का सैंड दिखता है एंड दैट्स मोर विजिबल आफ्टर द रेन्स and ओके। it's like very beautiful. Then there's another feature of this beach that there's a keyhole arch जहाँ से sun का rays align करता है during sunset and that happens in end of January। तो हम लोग जब गए थे तो we were actually able to see that, almost see that because it was वाह, like just a few days apart, but I have not posted about it yet, but that was a very unique experience to witness it। great। and this looks like a waterfall। Yes, so this is in Yosemite, and this was a part of a lab hiking trip. I actually okay। want to give a shout out to my lab कि वो इतना अच्छा है कि वो एनुअल रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी घूमने की जगह होता है। तो हम लोग लास्ट ईयर गए थे योसेमिटी
और Hmm. वहाँ पे हम लोग वी स्टेड विद इन इनसाइड द पार्क, सो इट वाज बेसिकली कैंपिंग, बट वी हैड आवर रूम्स एंड बेड्स, बट इट वाज मोर लाइक ग्लैम्पिंग। तो Nice. वो एक Nice. अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड दिस हाइक इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स कॉल्ड मॉडरेट, बट इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। लग ही रहा है बहुत स्टीप है मतलब फ्रॉम द पिक्चर इट्स शोइंग कि हमने काफी सुबह है। सुबह आई थिंक 8 बजे शुरू किया था, एंड वी रीच द टॉप एट, और धीरे धीरे करके लैब के लोग रुकते गए, कोई कुछ पड़ाव पे जाके रुक गया, कोई कुछ पड़ाव पे जाके रुक गया। अल्टीमेटली शुरू किया था 12 लोगों ने, पहुंचे सिर्फ 4 लोग ऊपर तक। और मतलब रुक ही गए हम लोग, एफर्ट भी नहीं किए बाद में और ऊपर आने का आस्ते आस्ते। कैसे बहुत एलिवेशन गेन है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1200 फीट का एलिवेशन गेन है, एंड इट टुक बहुत। लाइक 6 hours टू डू द हाइक। हाँ एंड नीचे उतरना कैसा एक्सपीरियंस नीचे कैसा उतरना भी नीचे उतरना वाज even नॉट more फन, tiring. was not fun. But the only saving grace is that we made our sandwiches, so we had food and water with us, so it was like कि अच्छा ठीक है कुछ खाया है। एक्चुअली Very इसकी important. एक और फनी स्टोरी है। तो इससे पहले मैं योसेमिटी गई थी विश्वजॉय के साथ, और वहाँ पे हम लोग ये सेम हाइक करने निकले। और तब हम लोग बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, ना हमारे पानी की 2 बॉटलें, ना हमारे पास कोई स्नैक्स है, ना हमारे पास कुछ नट्स है, ना कोई सैंडविच है, ना हाइकिंग पोल्स है, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ पानी की 2 बॉटलें हैं। हम लोग चल हम्म। रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, उसके बाद हमें ऐसे लग रहा है कि हम और चढ़ ही नहीं सकते, तो हम लोग 1/3 जाके ही वापस आ गए थे, और उसी में हमारी हालत खराब हो गई थी। इसका सेम एक एक्सपीरियंस मेरा और मेरे हस्बैंड का भी है। हम लोग हिमाचल में एक हिडन वाटरफॉल के वहां चले गए थे, वही एक बोतल पानी लेके, और कुछ नहीं था हम लोग के पास। वहां पहुंचते पहुंचते वो एक बोतल पानी भी खत्म हो गया, फिर हम लोग वाटरफॉल से ही पानी वानी पिए। एंड उसके बाद वापसी में तो आई एक्चुअली फेल्ट दैट आई एम गोइंग टू फेंट, क्योंकि एकदम बुरी तरह वीक हो गए थे, इतना डिफिकल्ट वो करके। और फिर कुछ खाने पीने का नहीं। तो प्लीज गाइस, ऐसे कहीं पे भी जाओ तो डेफिनेटली कैरी सम स्नैक्स एंड ऑल। बट कुछ लोग तो यू मस्ट नो कि योसेमिटी में एक एल नॉट एल कैपिटन, हाफ डोम करके एक है, दैट्स लाइक अ वेरी चैलेंजिंग हाइक। वहाँ पे एक ऐसा, इट्स लाइक अ स्टीप फेस ऑफ ग्रेनाइट विच इज ऑलमोस्ट एट अ 90 डिग्री एंगल, और उसका दूसरा साइड इज अ 45 डिग्री एंगल। तो ये पूरा हाइक करके ऑलमोस्ट 15-14 माइल की हाइक करके वो ऐसे एक बाकी का जो स्टीप का पोर्शन है वहाँ पे देर आर एक्चुअली केबल्स, लाइक यू कांट क्लाइम ऑन टू दैट विदाउट केबल्स, एंड इट्स सो हम्म। स्कैरी। बट कुछ लोगों ने हमारी लैब से वो भी किया हुआ है, नॉट ऑन दिस ट्रिप बट गए थे वो लोग करने। बट दैट्स समथिंग दैट मे बी आई विल अटेम्प्ट व्हेन आई बिकम मोर फिट, और मैं जिम जाके थोड़ा मतलब खुद को ट्रेन करूंगी, तभी मैं वो हाफ डूम का हाइक अटेम्प्ट करूंगी। श्योर, ऑफ कोर्स, ये सब के लिए फिटनेस इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। ये वाओ, ये ड्राइव। तो ये एक रील है जो जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ कैलिफोर्निया के डाइवर्स लैंडस्केप्स को। तो हम्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे कितना सुंदर एक सनसेट दिख रहा है, ये एक वाटरफॉल है योसेमिटी में। ये जो हम्म। रोड है दिस इज कॉल्ड आर्टिस्ट्स पैलेट, ये डेथ वैली एक बार नेशनल फिर से पार्क। देखते हैं ये कैलिफोर्निया का हाईलाइट्स। हाँ, ये सब चीज कैलिफोर्निया में ही है। वाओ। और ये पंजाब का खेत भी आ गया कैलिफोर्निया ये में। लेक टाहो से है जो बीच में आपको दिखा इससे पहले। हाँ, ओके। ये आपका कोई कॉन्फ्रेंस है? हाँ, ये कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, लैबमेट्स हैं। ये सैन डिएगो में कॉन्फ्रेंस था एक, तो जहाँ पे हम लोग कोरोनाडो बे में एक अच्छे से रिसॉर्ट में रहे थे। और उस टाइम हम्म। पे मैं आई थिंक वो मेरा कैलिफोर्निया का फर्स्ट ट्रिप था जब मैं नेब्रास्का में थी, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि अब तो मुझे कैलिफोर्निया मूव करना है। मुझे इतना अच्छा लगा कैलिफोर्निया उस कॉन्फ्रेंस में आके। वाह, वेरी नाइस। ये तो सबको पता है। सबको पता है ये मेरा The most target touristy job picture था। of the US, मेरा भी है एक सेम ऐसा। सही is, and this lovely picture. दिस इज ऑन द डे ऑफ माई कॉन्वोकेशन। तो Love. हाँ, मेरे साथ ऐसे हुआ कि आई आई ग्रेजुएटेड इन 2020, जब मतलब पैंडेमिक वाज एट इट्स
maximum peak. हम्म So we didn't have a in-person ceremony, but lab में ही हम लोगों ने वो हुडिंग वगैरह सब lab में ही किया, and it was a virtual ceremony that we had. तो हम्म उसके बाद ये कैंपस में एक गार्डन था, तो मैं और मेरी रूममेट गए, और मेरी रूममेट इज द बेस्ट फोटोग्राफर आई एवर हैड, लाइक इवन बेटर देन विश्व जॉय। वो उससे कितनी फोटोज खिंचवा लो, वो कभी मना नहीं करती। एंड देन हम लोग आई थिंक 1-2 घंटे तक यहाँ फोटो शूट करते ही रहे, मतलब हील्स में, ठंड में। अप्रैल का टाइम था, और अप्रैल इज क्वाइट कोल्ड इन नेब्रास्का उस टाइम पे। Yeah. And seems like you have always been lucky in terms of finding someone to photograph you. हाँ, I guess, रूममेट भी इतना अच्छा फोटोज खींच रही हैं। ये ये पंजाब के खेत। नहीं, ये भी कैलिफोर्निया में है। दिस इज वाइल्ड मस्टर्ड, एंड यू कैन सी द पैसिफिक इन द बैकड्रॉप। लवली। सो दिस वाज द मोस्ट रीसेंट कॉन्फ्रेंस दैट आई अटेंडेड। ये जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस थी, जर्मनी में हाइडलबर्ग में। तो कॉन्फ्रेंस का नाम है डिफाइनिंग एंड डिफीटिंग मेटास्टेसिस, और मेटास्टेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस थ्रू व्हिच कैंसर सेल्स स्प्रेड। ओके। एंड ये मेरा फेवरेट पिक्चर है आपका, मैंने इसी में आपका पोस्टर भी बनाया है। सो दिस वन इज। दिस इज इन बेल्जियम। तो हम लोग जर्मनी से, हम लोग मतलब मैं और मेरा एक लैबमेट गए थे। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जर्मनी में भी हम लोग रुके काफ़ी दिन। वी वेंट टू कोलोन, देन वी डिड सम साइट सीइंग इन हाइडलबर्ग। उसके बाद वी टुक अ ट्रेन एंड वी वेंट टू बेल्जियम। तो बेल्जियम में ये ब्रूक की फोटोग्राफ है, वहाँ पे भी हम लोग 2-3 दिन तक थे। हाँ, बहुत सुंदर है ये। वो आपका ये वाला फ्रेंड भी ठीक ठाक फोटोग्राफर निकला। गुड फॉर यू। ठीक है, दिस वाज ये द लास्ट पिक्चर दैट वी हैड फॉर नाउ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? वो काफी रिलक्टेंट फोटोग्राफर है। वो उसको आई डोंट नो वो कैसे मान गया उस टाइम पे। आई थिंक आई सेड बियर्स ऑन मी, समथिंग लाइक दैट। ठीक हम्म। है। बट अच्छा। उसके बाद से हम जब भी लैब ट्रिप में गए, वो मुझसे दूर ही चला जाता है, मतलब कि मैं उसको फोटो लेने के लिए ना बोल दूं। अच्छा, सो मीशा, सो कुछ तो हमने देख लिए पिक्चर्स आपके, बट व्हाट ऑल प्लेसेस हैव यू बीन टू यूरोप में और यूएस में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट? तो यूरोप में तो आई बीन टू जर्मनी एंड बेल्जियम, तो मेरा बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस था, एंड दैट दिस वाज ऑल सेंटर्ड अराउंड दैट वन कॉन्फ्रेंस दैट आई हैव अटेंडेड। बट मेरा बहुत मन है कि मैं यूरोप भी एक्सप्लोर करूँ। बट हाँ, मे बी इट विल हैपन विद टाइम, लाइक once I get some more time. And plus एक और चीज़ है जो maybe is a bit restrictive is, as foreign or as international in international students या workers बोलो, in US you're on a visa, so there are like some restrictions कि um, मतलब स्टैम्पिंग से रिलेटेड, और कोविड ने आके वो और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी उतना ईज़ी नहीं है सबके लिए, अनटिल एंड अनलेस यू बिकम अ सिटिज़न और गेट अ ग्रीन कार्ड। तो अच्छा। दैट्स समथिंग दैट आई गेस वी हैव टू प्लान मोर, तो इसलिए उतना ईज़िली इंटरनेशनल ट्रैवल्स हम लोग नहीं प्लान कर रहे। बट विद इन द यूएस बहुत जगह मैं घूम चुकी हूँ। ईस्ट कोस्ट के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स, मतलब न्यूयॉर्क, मेरीलैंड, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, नीचे जॉर्जिया। उसके बाद फिर सेंटर में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ, नेब्रास्का, आयोवा, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, फिर वायोमिंग, आइडाहो, ये सब जो स्टेट्स हैं। एंड देन वेस्ट में um, अच्छा हाँ, कोलोराडो इज देयर ऑल्सो इन मिड वेस्ट, कोलोराडो। देन एरिजोना, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया में बहुत सारी जगह। तो ऑलमोस्ट काफ़ी, द ओनली प्लेस दैट आई हैव नॉट बीन टू इन यूएस दैट्स बेसिकली ऑन माय नेक्स्ट टू डू लिस्ट इज हवाई एंड ऑल्सो अलास्का। बट वो मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत अच्छे से लंबा ट्रिप प्लान करूँगी, जहाँ पे जो एक वीकेंड ट्रिप ना हो, अच्छे से मतलब 1 हफ्ते या फिर उससे छुट्टी ज़्यादा लेके अच्छे से, है ना? नहीं नहीं, वर्थ इट, वर्थ इट। वो छुट्टी लेके ही जाने के लायक ही होगा। सो ऑलमोस्ट 20-25 स्टेट्स तो आप घूम ही चुकी हैं मिनिमम, के। इवन मोर में भी, है ना? ग्रेट। सो आपका सबसे फेवरेट प्लेस क्या है? सो मेरा फेवरेट प्लेस एक्चुअली है कैलिफोर्निया में बिग सर। सो आई हैव बीन टू दैट प्लेस मोर देन 10 टाइम्स नाउ। अच्छा।
within a span of, I think it's only been a little over 2 years that I've been in California. और उस 2 साल के टाइम स्पैन में I've been there at least 10 times or more. तो वहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए, and the landscape is so diverse and it's very varied, like depending upon what season you go. तो Hmm. स्प्रिंग के टाइम पे अलग दिखेगा पानी का कलर, समर में अलग दिखेगा, मतलब फॉगी हो जाएगा इनफैक्ट समर समर में, विच इज़ लाइक अ यूनिक फीचर। यहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट्स होते हैं कैलिफोर्निया में। तो अच्छा। विदिन लाइक 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस में यू कैन सी अ कंप्लीटली डिफरेंट क्लाइमेट, स्पेशली बे एरिया में, जहाँ मतलब गोल्डन गेट ब्रिज के आसपास या सैन फ्रांसिस्को की साइड अगर आप चले जाओ, तो ब्रिज की एक साइड और दूसरे साइड में यू विल फाइंड अ कंप्लीटली डिफरेंट वेदर। एंड ओह, दैट्स ओके। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और बहुत सारे हाइक्स है बिग sur में, बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत सारे नेचुरल फॉर्मेशंस हैं। कुछ सिक्लूडेड बीचेस भी हैं जो कि इतने प्रिस्टीन और अच्छे हैं, मतलब वहाँ जाके आप बस बैठिए, सनसेट देखिए, बस नेचर को एंजॉय कीजिए, मतलब इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। All right. So before we go to the last couple of questions, I will request the audience to please ask any questions if you all want, so that she can address your questions. So, what is your best and worst travel experience, Misha? So my best travel experience is, I think, visiting Yellowstone National Park, and that was my best travel experience because I was totally wowed by what I was seeing. Like in every nook and corner, I felt like अच्छा यहाँ रुक के फोटो लेते हैं, अच्छा यहाँ रुक के फोटो लेते हैं, मतलब इतना सुंदर था सब कुछ। They and it has everything. It has hot geysers, it has waterfalls, it has wildlife, it has forests, it has मतलब hot geysers, कुछ भी मतलब mountains. It has like pristine lakes, freshwater lakes. So that was, I think, one of my most cherished trip. Um, I definitely want to go back, and I want to go back in the winter because I think winter में और भी कम लोग होंगे और भी सुंदर दिखेगा when everything is snow capped. Uh, Yeah. एंड उसका आपका एक सीजन का भी कैप्चर अच्छे से हो जाएगा, येलो स्टोन इन द विंटर्स। हाँ, हाँ। एंड वर्स्ट ट्रैवल Worst, एक्सपीरियंस? worst was actually fairly recent. So we went to Mexico. I'm not saying the entire trip was bad, but then we were in Cancun. Cancun काफी अच्छा था, but then we were traveling to, and we went to Chichen Itza और दो तीन और जगह हम लोग गए, तो वो सब अच्छा था, but हम लोग जा रहे थे टुलुम, which is like a very touristy sort of spot. एंड देन प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोगों ने गाड़ी रेंट की, बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंट driving conditions that they are in Mexico. So we thought, okay, it's Mexico, so it must be like similar to what it is in US, but it was actually quite different and ओके। very challenging to drive there. So it's a 1 hour trip. It should take 1 hour from Cancun to Tulum, but we were stuck in traffic, and it took us almost 3.5 hours. And our entire day was like wasted because of it. And we आई एम couldn't. लोकेटेड इन बैंगलोर एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर्स के लिए जब 1 आवर चलना पड़ता है ट्रैफिक में, तो समझ में आ जाता है, होश ठिकाने आ जाते हैं। वही हुआ और आपके मे साथ बी एक्स? अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो यू गो विद दैट एक्सपेक्टेशंस, राइट? वी वेंट टोटली अनप्रिपेयर्ड। हमें लगा अच्छा ठीक है, 1 घंटा, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो 1 घंटा जब 4 घंटा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो then जाता है, it's हाँ। like, yeah। रूइन हो जाता है पूरा एक्सपीरियंस, डे, एवरीथिंग, है ना? तो हम लोगों को 2-3 जगह जानी थी, हम लोग बस एक ही जगह जा पहुंच पाए। बस वही करके When हमने, are we going to see your Mexico updates? I'm तो really waiting. या Instagram वेरी में अभी तक आया नहीं है very कुछ। soon. I think I'm almost done with spring updates, so I'll अच्छा। be posting about Mexico next. So, as a travel content creator, Misha, which country do you think is an absolute treasure कि वहां जाना ही चाहिए? तो मुझे लगता है फिनलैंड, जो मेरे लिमिटेड नॉलेज से मुझे पता है, जो मैंने दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, वहाँ पे आई थिंक काफ़ी कुछ है। अगेन माय
my sort of answer is based on how diverse the nature is over there and how Hmm. you can see different things in different seasons. Plus मुझे and there's like no one answer to this. मैं और भी बोलना चाहूँगी कि यूएस में भी इतने सारे hidden gems हैं और इतनी चीज़ें हैं जो मैंने खुद नहीं देखी हैं. तो I would say US is also definitely something that people should come and experience, like at least once, and not. I guess it depends on what people find more interesting. But if it were left to me, I would not go to New York or San Francisco, but I would go to like some other, you know, some places that are not as popular but have so much more to offer. Um, Sure, sure. and But India, I would like to add here to your this thing ki you should also think about Iceland because I've heard ki Iceland is like it's really majestic. All four seasons में एकदम अलग दिखता है and all that. Nature lover के लिए तो बहुत ही हाँ, seasons and nature वाला जो content है आपका उस हिसाब से Iceland is also quite relevant a हाँ. destination. मैं एक्चुअली Oh, यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट की बहुत जगहें हैं जो मैं नहीं गई हूँ अभी भी, तो मेरा वहाँ भी जाने का बहुत मन है। प्लस hmm, इनफैक्ट इवन दिल्ली और जयपुर में भी इतनी जगहें हैं जो मैंने नहीं बहुत देखी हैं। तो दैट्स ऑब्वियसली ऑलवेज़ ऑन माय टू डू लिस्ट, बट जब आप इंडिया जाते हैं तो वो सिर्फ़ घर पे रह के और अच्छा खाने में पूरा ट्रिप चला जाता है। राइट राइट और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता ही है उस समय जब आप आते हैं है हाँ, ना और जब आप बाहर से आते हैं, इतने दिनों Something you बाद visit. आते हैं, तो पेरेंट्स कहीं जाने नहीं देते, बोलते हैं नहीं घर पे समय बिताओ, तो वो एक लिमिटिंग No, but फैक्टर good हो thing जाता for you is कि you are a Delhi based person तो दिल्ली ही अपने आप में बहुत ट्रेजर ट्रोव है चीजों को देखने करने के है। हाँ, लिए हाँ। बहुत कुछ है वहाँ ओके लास्ट क्वेश्चन इफ टाइम एंड मनी वर ऑफ नो कंसर्न so what is the one journey you would really like to undertake ASAP? मैं बोलूँगी आइसलैंड है वो, बट देन आई वुड लाइक टू एक्चुअली ऐड टू दैट एंड से कि यूरोप, मैंने उतना यूरोप नहीं देखा है एंड देन आई वाज़ लाइक heavily influenced by what I saw in my limited duration there last year. Mm-hmm. So, and one of the things that's like really lucrative for travelers is that you can travel from one country to another so easily there, like through train, which is Yeah, yeah. new in US. Like कभी कभी तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में इतना टाइम लग जाता है यूएस में, जो कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच सकते हैं यूरोप में, और वो भी मतलब इन नो टाइम। और अभी तो विद देयर फास्ट पेस्ड ट्रेन सिस्टम इट्स लाइक सुपर इजी टू डू दैट। तो वो Yeah. एक है मेरा कि मैं कभी जाऊँ 2-3 साल में एटलीस्ट एक बार और यूरोप। All right. All right. So, for me, my questions are over. And I think our audience has also not asked us anything. So, this was a really great conversation, very helpful for people who aspire to be travel content creators. The tips that you've given, I think many of them I will myself be implementing in my content creation strategy. Thank you so much for giving us your time, Misha. थैंक यू विजेता, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सेशन था ये। एंड आई थिंक द रीजन पीपल हैव नॉट आस्क्ड इज बिकॉज यू हैव बीन सो कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑल योर क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया हम लोगों ने। तो हाँ, एक तरह से कर ही लिया हमने कवर सब and कुछ। I look forward to like other live sessions from you. So you're doing a really great job at that, at it. Thank you so much. Let's end this broadcast now. Bye. Thank you to the audience as well who's still sticking around with us. And of course, a lot of people do watch these videos later on as well once they have the time. So, really hope that a lot of people benefit from this conversation. Thank you. Bye. Have a nice Saturday night, you, Misha. Bye Yeah, bye. enjoy your Sunday. Bye.